और पागल में कोई बुराई नहीं है, देखो पागल में कोई बुराई नहीं है। हमारे एक संत कहते थे पंजाबी में, वो कहते थे पागल, गल मतलब बात, बात। जिसने असली बात को समझ लिया, जिसने पा मीन्स टू रिसीव, टू नो, टू अटेन द रियलिटी, पागल। The one who has understood the truth is a. So are you pagal? Or you should say we want to be. Oh please bless me, I want to be pagal. But it simply means acha. In Punjabi language we have beautiful meaning again, and that is gale lagana, है ना? तो pagal, to embrace, pa, to, gal, neck. So to embrace somebody is called, पंजाबी में जैसे गल पा, गल वकड़ी पा, छोटा कर दे तो गल पै गया। तो गल पै जाए मतलब टू थिंग्स हो सकती, एक तो ही कि लड़ पड़ा है, एक ही गले लग गया। हम तो दूसरे वाले को पसंद करते हैं। सो ये महात्मा कहते थे जिसने परमात्मा के गले में बाहें डाल दी हैं वो है पागल, पागल। और अगर परमात्मा के गले में तुम बाहें नहीं डाल सके हो तो अभी तुम दूर हो, अभी तुम बहुत दूर हो उससे, क्योंकि गले मिलने के लिए पास होना पड़ेगा, उसकी रेंज में होना पड़ेगा, उससे रूबरू होना पड़ेगा, तभी तो पागल हो सकेगा ना, नहीं तो कैसे होगा। सो पागल, another meaning and another take to this is the one who is in the divine embrace is a pagal. English pagal, crazy. Now if somebody calls you crazy, you will be very offended, but if you know the meaning, you give meaning to the words. Words are neither bad nor good. You give meanings to that. So now if somebody says, you are crazy, thank you so much. तेरे मुंह में गुड़ शक्कर के हम हो जाएं पागल, कि उस सच को हम समझ लें, उस सच्ची बात को हम समझ लें, हमारे जीवन में वो ज्ञान जो है वो प्रविष्ट हो जाए। ऐसे को हम कहेंगे कि वो जीवन के उस खोज को पूरा कर लेता है जिसके लिए ये जीवन है। मैं ये नहीं कह रही परमात्मा को पाने के लिए जीवन है, क्योंकि ये तो मैं बोल रही हूं ना, तुमको थोड़े ना। कोई यूएस ग्रीन कार्ड पाने बैठा है, कोई यूएस का मकान पाने बैठा है, कोई यूएस में पढ़ाई पाने बैठा है, कोई कुछ पाने बैठा है। यहाँ कोई इंसान ऐसा तुम्हें नहीं मिलेगा जो ये कहे मैं भगवान को पाने के लिए बैठा हुआ हूं, ना यहाँ ना भारत में। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में वो जो अज्ञान है ना भरा हुआ, उस अज्ञान की वजह से दिख रहा संसार ही सच लगता है, इसलिए यही प्यारा लगता है। The world which you can see becomes so endearing, you wish to have it, you wish to enjoy it, you wish to love it, you wish to hold on to it, you wish to possess it, and you will never ever think that whatever you are seeing, the visible world, is actually and in reality an illusion, nothing more than that. I give you one demo. For the demo I need a flower. Okay. क्या है जी ये? फूल। क्या है? के फूल। फूल के फूल। और आप कौन हो? फूल के फूल। ये जो वैसे जो फूल है चाइनीज मेडिसिन में, दिस इज यूज्ड
to decongest the liver, it goes to liver. Right, Dr. Sir? Now you say this is a flower, but if I begin plucking the petals one by one or together as such, what I will have is just this, right? Now where is the flower? Where did it go? The flower was sum total of these petals joined together in the bud. Right? He said that's a flower. Now you will say it is not a flower but flower petal. Right? If I keep it like this for 5-6 days, then it will turn brown and will dry up. Then it won't be called petal. Then it would be called what? Trash. Okay, fine. Whatever you say. And then we throw it out. Now this can be a very good, it can be converted into a fertilizer if you just put it directly into the soil. So after a few weeks, that dried thing, the trash, would look like a soil, would become one with the soil, and then you will call it not a flower, not a petal, not a trash, but soil. I was just looking at the news. Las Vegas is all desert, and yet there is floods now. Flooding is happening. Now, if the water comes up in a huge amount, then soil will get mixed up with water. Then what would be visible, soil or water? Then it is a water. And not small, but a huge river. That river, when the sun comes and the rain goes away, and the sun will dry up all, the water will evaporate and become part of air. Can you see how the name and forms are changing? First a flower, then trash, then soil, then water, then air. And air is moving in the ether, and now you cannot judge or choose which part of the air was the flower. जो दिखता है और फिर बदल जाता है, उस बदल जाने वाले को हम संसार कहते हैं, उसी बदल जाने वाले को हम माया कहते हैं. फूल, पंखड़ी, कचरा, मिट्टी, मिट्टी मिला पानी में तो पानी, पानी धूप से वाष्पीकरण हुआ बन गया हवा, हवा है आकाश में. तो ये सारा संसार इन्हीं पंच तत्वों का ही तो खेल है ना. 5 तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश की कॉम्बिनेशन से शरीर, फूल, पेड़ बनते हैं, मिट जाते हैं, फिर बनते हैं, फिर मिट जाते हैं, फिर बनते हैं, फिर मिट जाते हैं. तो जो बने और मिट जाए उसको हम कहते माया. Suhana, how old are you? 14. Where were you 15 years ago? Don't know. Where will you be after 15 years? Don't know. Now this don't know is agyan, right? This is not knowing, agyan. Suhana,
was, I think so, maybe some 8 or 9 month old when her nanny Usha brought her picture to me, and she said, "This is my first, this is my granddaughter." 8, 9 months old picture. And now she is 14. Body has changed. Now if we go further behind, then once upon a time she was in mother's womb. And 9 months before that, even her mother or her nanny doesn't know where she was. फिर किसी एक दिन स्त्री प्रेग्नेंट हुई, फिर 9 महीने में या 8 महीने में या 10 महीने में वो बच्चे को जन्म देती है, लड़का या लड़की हुआ, फिर उसका नाम देते हैं, फिर वो पढ़ता लिखता है, फिर वो बड़ा होता है, फिर वो भी टीनेजर हो जाता है, फिर वो पूरा जवान हो जाता है, फिर वो शादी पढ़ाई वाला सर्कल पूरा करता है, फिर वो मिडिल एज हो जाता है, फिर वही बूढ़ा हो जाता है, फिर वही एक दिन मर जाता है। हालांकि मौत बहुत पहले भी आ सकती है, बचपन में, जवानी में, मिडिल एज में, 40 में, 50 में, 60 में, 70 में आ सकती है। अब जब शरीर मरता है तो फिर वही क्रेमेशन ग्राउंड या इलेक्ट्रिकल जैसा यहाँ चलता है फ्यूनरल, तो डाला और अगले दिन आपको एक अर्न में एशिस वापस कर देते, लो जी ये रहे। अब वो एशिस कोई इंडिया ले जाएगा, कोई यहीं समंदर में किसी पानी में डाल देगा, जैसे जिसकी श्रद्धा होती। जब जिंदा होते हैं ना तो बिजी होते हैं, जब मर जाते हैं तो उसमें लटक के हवाई जहाज में जाके सीधे हरिद्वार गंगा में डुबकी मार रहे होते। उसका क्या मजा पहले बताओ मेरे को। What's the fun in that? Going in that urn in form of ashes, even if you are taken to Haridwar, no use at all. But people are so scared that our mom and dad should not end up in a hell. So their ashes have to go to in the Ganga ji, because if they go in Ganga, immersed in Ganga, then surely they'll reach the heaven or Bhagwan ka ghar or God knows where. Suddenly, out of fear, people begin to behave in a very different way. Even those who are not religious will also go to Haridwar and Ganga. It's better to go when you are alive. Huh? No fun going in that. It's very tight. That urn is not a comfortable place. ऋषिकेश इस साल शिविर रखा है, इसीलिए रखा है कि जिंदे जिंदे आ जाओ। गंगा जी में डुबकियां लगा लो, मजे कर लो। हाँ, जिंदा जिंदा रहते में मजा ले लो। पर शरीर क्या है, बीच में कुछ देर के लिए है, पहले नहीं था, मरेगा तो फिर नहीं हो जाएगा। इसको भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, शरीर पहले अव्यक्त था, दिखता नहीं था, फिर कुछ देर दिखता है और फिर दोबारा ना दिखने में चला जाता है। ये जो बीच में दिखता है और पहले और बाद में नहीं दिखता है, उस शरीर को आप मैं अगर समझते हो तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। ये शरीर जो जन्मता है, पलता है, बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, बीमार होता है, जिंदगी के मज़े भी लेता है, पर एक दिन फिर मर जाता है। ये जन्मने और मरने वाला शरीर तुम नहीं हो, ये रोगी होने वाला शरीर तुम नहीं हो। इस शरीर में हो पर शरीर नहीं हो। You are in this body, but you are not the body. That which is born is not you. That which will die is not you. That who has grown as a child or a teenager or a mature person is not you. That which is fat or slim or sick is not you. This body is not you.
Yes, you can agree to what I am saying, but the actual benefit would be by encountering your own reality yourself, that you are not the body. So not listening alone will not help you. Because listening alone, well, you heard, I spoke, game over. And then you go out and somebody insults you, you get angry. Somebody respects you, you get happy. Somebody doesn't give you your, you think this is my worth and somebody is underplaying you, you will get upset. So getting upset and sad and angry and agitated, all these things will keep on happening until you realize that who you are is definitely not this body. This is part of what I call Maya, the illusion. The illusion of me being in this body. Now that has to be broken. Now, if that is broken, this identification which you have created with this body, if this is broken, then nobody can make you sad or unhappy. Because they don't know you. You know who you are. The person other just sees the body only, doesn't know who you are. So cannot insult you.